मैं दोबारा नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। अनलेस अनटिल, हाँ, एक काइंड ऑफ, मतलब अगर टाइम बच गया, वैसे टाइम बचता ही नहीं है सीआरपीसी का, जो अब जिस तरीके से चलेगा उसके हिसाब से टाइम नहीं बचेगा। तो प्लीज ये कंसीडर करके चलो कि ये टॉपिक जो हो गया वो हो गया, ठीक है। आप लोग डाउट्स ले सकते हो, डाउट्स ला सकते हो, वो हो जाएगा, बट क्लास में पूरा टॉपिक कराना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा दोबारा से, ठीक है। और लास्ट क्लास की वोटिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हम लोग इस वाले मोड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो कन्वेंस जो मैं पहले करा रही थी कि एक एक डेफिनेशन वाला पार्ट वही करवाया जाए, राइट। मैं एक बार शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड, अगर होता है तो। ओके, आर यू गेटिंग व्हाइट बोर्ड ऑन माई स्क्रीन? यस बेटा, आर यू Yes, गेटिंग माई ma'am. व्हाइट? हाँ बेटा, इस टॉपिक को मैं दोबारा नहीं करा पाऊंगी, तो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। अगर आपका कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, वरना डाउट तो हम एक बारी को फिर भी ले सकते हैं, बट टॉपिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2D कराया था आपको, याद है, डेफिनेशन, जिसमें मैंने कहा था ओरल और राइटिंग में मजिस्ट्रेट होगी विद द पर्पस दैट ही वुड टेक सम एक्शन। Complaint can be made against a person who is known to the complainant or maybe unknown to him. It does not include a police report generally, but where a police officer has explanation कहते हैं, where a police officer has done the investigation and during the investigation or at the end of the investigation he filed a report by saying that it is a non-cognizable case. So here that investigating officer can turn into a complainant, and that police report turn into a complaint. Then the examination of complainant is given under section 200. According to this, complaint can be oral or in writing, but examination is something which is must, right? Examination is must, compulsory है, but इसके exception क्या है? First is public servant and second one is court, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंप्लेनेंट है, एंड प्लस इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, देन देयर इज नो नीड टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट, ठीक है। अदरवाइज रूल क्या था कि एग्जामिनेशन इज मस्ट, और एग्जामिनेशन के साथ ही जो पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, दैट मस्ट बी जॉटेड डाउन। मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, प्लस जिस्ट या ब्रीफ examination to be in written. ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? यस क्लास, इज इट क्लियर टू यू? बेटा क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको मैं डिलीट कर दूं? कैन आई डिलीट इट? Yes, ma'am. Clear. ओके। नाउ इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट जो दिया था वो ये दिया था कि पब्लिक सर्वेंट है और कोर्ट है, तो दैट 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 इज, मतलब एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग। देन इसके बाद एक पॉइंट आया था 201, दैट इज कि अगर मजिस्ट्रेट इज टेक्स्ट, yes, 201 is saying where the complaint magistrate is not competent to take the complaint, then he will endorse or forwarded the complainant or along with the complaint, if the complaint is in writing, to the magistrate who is empowered to take cognizance on a complaint.
और who can try a not cognizance, who can try a complaint case. और इस वाले केस में that magistrate to whom the matter is referred is not bound to re-examine, need not bound to re-examine the complainant, क्योंकि कॉग्निजेंस जब लिया होगा कंप्लेंट के ऊपर पहले ही एग्जामिनेशन हो के आया होगा, राइट? याद है ये वाला पॉइंट आपको? देन आई टॉक्ड अबाउट सॉरी सेक्शन 190, ठीक है, दैट इज 1A B and C, ठीक है. Then I talked about section 192 also, that is making over the case to a magistrate, ठीक है. Then I talked about section 202, that is talking about postponement of issue of process by passing an order for investigation or inquiry, right? इसमें एक पॉइंट था कि 202 में द कोर्ट विल नॉट पास एन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ द मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. याद है आप लोगों को? सिंपल वाला उसी का बी पॉइंट था, that the court will not shall not pass an order for investigation if the court if the complainant is a court, right? और उस वाले सिचुएशन में ना कोर्ट इंक्वायरी के लिए कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर नहीं करेगी, तो दैट मीन्स द कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर ओनली फॉर द इंक्वायरी, ठीक है. और साथ में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस पे वन मोर पॉइंट, दैट इज कि इफ द कोर्ट फाइंड दैट द एक्यूज्ड इज नॉट रिसाइडिंग विद इन हिज टेरिटरी वेयर ही हैज अ पावर टू ट्राई द मैटर, देन इट इज अ मैंडेट अपॉन द कोर्ट एंड शैल लिखा हुआ था वर्ड to pass an order pass an order for the postponement of investigation or inquiry, ठीक है. Then 203 is talking about the dismissal of complaint. Dismissal of complaint के लिए 200 के बाद की सिचुएशन भी हो सकती है, 201 के बाद भी हो सकती है, 202 के बाद भी हो सकती है. The point is 203 में the magistrate has to give the reason in writing, ठीक है. इसके साथ ही मैंने 200 जब कराया था आपको, उसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, which court can try the cognizance and not so that is 461 to 465, that is irregular proceeding, वो भी मैंने आप लोगों को कराया था. ये सारे का सारा मैंने वन गो में आपको कंप्लेंट टॉपिक में कराया है, राइट? आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक क्लियरली अच्छे से घर पे देख लिया होगा. Now today I am going to start with you the next topic, that is investigation, inquiry and trial. और as you said कि मैम हम लोगों को थोड़ा सा मतलब वो वाला ही तरीका ठीक लग रहा है कि आप पहले डेफिनेशन कराओ फिर एक एक टॉपिक लो, तो मैं वही करवा रही हूँ अब. इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी and trial. So this is the topic which I am going to cover today. Right? So investigation, yes. Let's start discussion on this topic. Investigation क्या है? What is investigation? Any one of you? Anyone who can explain me what is investigation? Who has the power to do the investigation? What is the purpose of doing the investigation? What is the logic Ma'am, behind it? हाँ. ma'am, the inspection of facts stated is investigation. Inspection of, just a second बेटा मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा. Inspection of facts आपने बोला है, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Anything else? Ma'am, and its purpose is to find out whether the facts are true or not, or they are bogus claims. This is what I think. Find out the validity of the facts. ठीक है? Yes, ma'am. Anybody else? Anybody else who want to tell me what is the purpose of investigation, inquiry and trial? What is the logic? Why there is a need of investigation, inquiry and trial, and why they are incorporated as a concept under the Code of Criminal Procedure? What is the cardinal principle of the criminal law?
कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? आप लोग आईपीसी पढ़ के आए हैं? The cardinal principle of criminal law is to ensure fair trial, right? And you know this thing that in criminal law presume each and every person presumed to be innocent unless and until his guilt is proved beyond doubt, beyond reasonable doubt, right? And you know this thing that it is the public prosecutor who has the duty to convince the court that there is a prima facie case made against the person, made against such and such accused who is charged for an offense, right? So that is the reason there is a need, there is a concept, there is the incorporation of these concepts: investigation, inquiry, and trial. So investigation is something which is done by a police officer or by a special investigating agency. ठीक है? Police officer means CBI also, a special investigation agency appointed by the court or by the authority, as the case may be. The purpose is to collect the evidence. So Harshita, you are absolutely correct here. The purpose is to collect the evidence, right, and to collect the evidence and to reach to a situation कि basically अगर मान लीजिए if the person is charged, so what are the evidences which are against him, what are the evidences which are in favor. So it is required, though that is a different thing कि police वाले they believe that कि as soon as the case lodged against a person, they try to collect the evidence with the mind, with the setup of mind that they are required to collect the evidence to prove the guilt of the accused. No, this is not so. The purpose is to bring to bring the truth before the court, and the purpose is to collect the evidence कि चाहे वो against में जाए चाहे favor में जाए, that does not matter. In fact, their duty is just to collect the evidence and put it before the court. When the court is trying the matter, they have the duty to bring all those facts, all these evidences before the court, right? So this is the investigation. The purpose is to collect the evidence. A validity wala point जो है बेटा, that is checked at the stage of the inquiry, not at the stage of the investigation. Inquiry is something which is done by the court, ठीक है? The purpose is to find out the validity of the fact or to check whether that particular evidence with that particular fact is correct, truth है या false है, right? So this is the inquiry. Inquiry is something जो हम लोगों ने 202 में जो हमने पढ़ा था उसके according, that is something which is done by a court or by a person who is authorized by the court but not by the police officer, right? And trial. Trial is nowhere defined under the CRPC. The types of trial are explained. There are 4 types of trial. The first stage of the trial is the framing of charge. The end result of the trial is always acquittal or conviction. Trial is always before the court, which has the power to try the matter according to Schedule 1. I hope this much is clear to you. Yes, class, any doubt till now? No, ma'am. Okay, now let me share with you the Bear Act and let us see what is the provision. What section 2 says about this investigation, inquiry, and trial. And I just told you that trial is nowhere defined under the CRPC, but we will get the definition of at least investigation and inquiry. Okay. So I hope you are getting my that Bear Act on this screen. Are you getting the Bear Act on the screen? No? Let me share with you once again. Is it visible to you now? Yes, ma'am. Okay. So beta यहाँ पे please add on this point also. Investigation is the first stage of any criminal case. I am not saying it is the first stage of the trial. What I am saying उसे please pick करना as it is ही pick करना है आपको.
Investigation can be the first stage of any criminal case. It includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. आप लोगों को मैंने अभी एक टर्म बोला था, it may include a special investigation team also constituted by the authority, by the court, ठीक है, including like CBI, special investigation team, special investigation team, SIT, right? And the purpose is to collect the evidence, but it is not done by a magistrate, right? This is the first stage of any criminal case. Is it clear to you? Please write this line that it is the first stage of any criminal case. It is defined under section 2H, ठीक है? It is done by a police officer. The purpose is to collect the evidence, ठीक है? Other than the magistrate, ठीक है? At the end of the investigation, a police report is submitted generally, ठीक है? Now 2G. What is 2G? 2G is inquiry. It defines the term inquiry. It is other than a trial, ठीक है? Other than a trial, the purpose of inquiry is to find out whether the evidence which is collected by the investigating officer or whether that particular fact is true or false. ठीक है, तो validity of the evidence or a particular fact is checked under the inquiry. It is conducted by a magistrate or by somebody, but not by a police officer. It is different from the trial. It is a judicial proceeding, right? It is a judicial proceeding. I mean to say, it can be done by a magistrate, but it is different from the trial in a way that trial is always result into either the acquittal or conviction, whereas inquiry, the end result of the inquiry is not the acquittal or conviction. Are you getting me on this point, beta? Is it clear to you that much? This is the second stage of a criminal case, ठीक है? This is the second stage of any criminal case, right? तो यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी दोनों कंप्लीट कर दिया. ट्रायल इज नो वे डिफाइंड अंडर द बेयर एक्ट, अंडर द डेफिनेशन पार्ट. इनफैक्ट जो आप लोगों का ट्रायल स्टार्ट होगा, आपका नहीं, सॉरी, the provision pertaining to trial started from section 225. It categorized the trial in four kinds. One is session trial. You can write session trial is taken by the session court, then warrant trial, which is taken by the magistrate, right? And in fact, the other three trial, warrant trial, summon trial, and summary trial, they are something which is taken by a court of magistrate. Session trial is the only trial which is taken by the session court. The detailed procedure of these trial is given from section 225 to 265, right? So that we will cover in unit 3. Wait for some time. तब तक के लिए आप लोग. So this is investigation, inquiry, and trial. Trial is the third stage. The end result is acquittal or conviction. It is always before the court. The purpose is to determine the guilt. ठीक है? The CRPC ensure a fair trial. ठीक है? That means कि justice not only be done but seems to be done. It follows certain cardinal principle of the criminal law that like no one can be judged in his own case, no one can be under the constitution also this is given, no one it can be forced to give evidence against himself, right against self incrimination, where no one can be punished twice for same offense. These are the certain cardinal principle of natural justice, that every person presumed to be innocent, the burden of proof lying upon the public prosecutor to prove the guilt beyond doubt, right? These are the certain cardinal principle of the criminal law.
Is it clear to you? Can I move further? Yes, please, class. Yes, ma'am. Okay. Just a second. मैंने लॉक कर दिया था. Sorry, मीटिंग को. Just a second. Let me download your attendance. Yeah. Okay. Now the next keyword which we need to cover is police report. Section 2R. बेटा आप लोगों को मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया था कि द एंड रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन done by a police officer is a police report which is submitted by a police investigating officer by a police officer under section 173 before a magistrate. ठीक है? And this is basically a report which reveals what the police officer got during the investigation, what are the evidences against the accused. On the basis of this police report, the court will take the cognizance and start the trial of the accused, right? So this is the police report. ठीक है? I will give you a detail of section 173 subclause 2 when we will cover 154 to 173. So it is not in our syllabus, but I will cover this topic. ठीक है? Now next one is summon case and warrant case and public prosecutor. Public prosecutor beta 2U में है. I will explain you as an independent topic when I cover with you hierarchy of criminal courts and all the agencies, yeah, different bodies in this CRPC. There I will explain it to you. But for the time being, definition purpose के public prosecutor means a person who is appointed under section 24 and include any person acting under the direction of a public prosecutor. So what is the job of a public prosecutor? Who can be appointed as a public prosecutor? What is the duty of a public prosecutor? That all we will cover when I cover with you this topic. Just give me some time. एक बार इसको cover करने के लिए पहले definition हो जाए. Then I will go to the that the different bodies, functionaries under the CRPC. There we will cover it exhaustively. Now next one is summon case and warrant case. This is the last keywords which we need to cover. Summon case means a case relating to an offense not being a warrant case. So summon case is something which is defined under section 2W. बेटा अब मैं अगर आप लोगों को बात करूं कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा तो these keywords जो है आपके these definition में जो हम लोगों ने keywords cover करे हैं they can be asked by the examiner for 5 marks. The difference between investigation, inquiry and trial, cognizable, non-cognizable, complaint case, police report, the same way cognizable, non-cognizable, bailable, non-bailable, summon case, warrant case. So this difference can be asked. They specifically ask you to explain any of the topic in 5 marks, जो compulsory रहता है आप लोगों का. Now, warrant case means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, or for imprisonment for a term exceeding 2 years. So, are you getting this thing? The warrant case is of heinous nature, where the punishment is more than 2 years. In fact, they are the offenses for which the punishment can be either death or imprisonment for life or at least more than 2 years, right? Whereas summon case is a case which is not a warrant case. That means where the punishment is less than 2 years. So that is a summon case. In a summon case, the court will generally issue a summon to call a person, and in warrant case, the court will issue a warrant, right? Warrant case can further be divided into 2 parts. Warrant case, bailable warrant case or non-bailable. In bailable warrant case, the accused will get the bail at the time of the arrest only. In non-bailable, after according to the discretion of the court, right? Is it clear to you? Yes, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is summon case and warrant case.
और इसके साथ ही मैं एक बार ये और चेक कर लेती हूँ, मुझे कोई और कीवर्ड तो नहीं कराना है, नहीं। ऑफेंस का डेफिनेशन आप अंडर दिस आईपीसी भी करके आए थे, बट हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। But still, let me tell you, offense means any act or omission made punishable by law for the time being in force, and include any act in respect of which complaint may be made under Section 20 of Cattle Trespass Act. Judicial proceeding include any proceeding in the courts of which evidence or may be legally taken on oath. ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने करा दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से सेक्शन करने हैं, डेफिनेशन करनी है, वो मैं मार्क कर देती हूँ। सेक्शन 2A प्लीज आप अपने बैरक्स में भी मार्क कर लीजिए, बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। देन 2G H, 2R, 2U समन केस, वारंट केस। विक्टिम का भी आप कर लीजिएगा। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में वैसे वो मैं डिटेल में वहां कराऊंगी एक बारी और, बट फिर भी victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the just wait, act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim include his or her guardian or legal heir. ठीक है, and warrant case. These are the words which you are required to do in the definition part. One, एक second, let me count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 keywords हैं बेटा total, which you need to cover in the definition part. Is it clear to you? Any doubt till now? Okay. अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट मी स्टार्ट विद यू द hierarchy of criminal court और the next topic that is functionary under the CRPC. जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को लेसन प्लान शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए हमारा ये टॉपिक में हमने ये कर लिया है। बेटा दिस इज माय लेसन प्लान। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक कराया वो मैं दिखा रही हूँ आपको, जो हमें करने हैं, जो रह गए हैं वो भी पता चल जाएंगे। ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीआरपीसी मैं बता चुकी हूँ। फंक्शनरी अंडर द सीआरपीसी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू जस्ट आफ्टर सम टाइम। हिरार्की, इसमें फंक्शनरीज में हम कौन कौन सी कर रहे हैं, हिरार्की ऑफ कोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, और हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहे हैं, जेल अथॉरिटी कर रहे हैं। दीज आर दी हिरार्की विच वी विल कवर। अब डेफिनेशन में जो मैंने आप लोगों को करा दिया है कंप्लीट, वो कराया है 2AGHWWAX, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंप्लेंट, चार्ज, पुलिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, समन एंड वारंट। तो इसके साथ ही हमारा डेफिनेशन पार्ट इज ओवर। नाउ आई नीड टू कवर विद यू the functionaries. The first functionary which I am going to cover with you is the hierarchy of criminal code. ठीक है, is it fine?
Yes, ma'am. Okay. Now let me share with you वर्ड फाइल ताकि मैं उस पे आप लोगों को ड्रॉ करके दूं. बेटा मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया है? Yes, ma'am. ओके. हमारे पास टॉप मोस्ट कोड कौन है? विच इज द व्हाट इज द टॉपेस्ट कोड? एपेक्स कोड कौन सी है हमारी? थोड़ा छोटा आ रहा है. Let me increase the size. Apex Court of India. Can any one of you tell me? Ma'am, Supreme Court. Below the Supreme Court, we have High Courts. yes, High Court. I hope मैं इसको लिख पाऊँ, जो मुझे थोड़ा लग रहा मुश्किल है, but let me try. सुप्रीम कोर्ट के नीचे ठीक है. Below the High Court कौन है? Ma'am, Sessions Court. Yes, Court of Session. Right? हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं. Below Session Court. Yes, below the Session Court. मैम जुडिशियल मजिस्ट्रेट. बेटा इसके बीच में एक और भी है, कोशिश करो याद करने की. Assistant sessions. Yes, असिस्टेंट सेशन जज. इनके इक्वल जो होते हैं दैट इज असिस्टेंट सेशन जज. जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक. मेरे को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे आना चाहिए असिस्टेंट सेशन जज के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी चेक, जस्ट अ सेकंड बेटा. असिस्टेंट सेशन जज के इक्विवेलेंट है इस साइड पे जुडिशियल
मजिस्ट्रेट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसे थोड़ा सा मुझे और लिख, ठीक है। और इसके ही इक्वल है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एक सेकेंड, बेटा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? इसे मैं पूरा लिखूं? Yes. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पूरा लिखूं? चीफ मेट्रो मेट्रोपॉलिटन में स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम आया है? मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहता है वैसे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे हमारे रहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है। तो जनरली असिस्टेंट सेशन जज जो है, इसके नीचे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। बट आप लोगों को, अगर आप लोग एक सेकेंड, मैं ये हिरार्की जो इसमें गिवन है केलकर में, वो दे रही हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड रुको। शेफाली है क्लास में? शेफाली? यस शेफाली, मैं ना एक हिरार्की आपको अभी सेंड कर रही हूँ कोर्स का, ठीक है बेटा। ये अपने एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, और एक बारी इसको आप प्लीज स्क्रीन भी शेयर करना। ठीक है। लेकिन बेटा मैं इसे इसके साथ नहीं रखना चाहूंगी, उसको क्यों नहीं रखना चाहूंगी उसका रीजन मैं अभी आपको देती हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग वैसे जो केलकर है उसमें यही गिवन है कि असिस्टेंट सेशन जज और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे आर इक्वल। शेफाली आ गई हिरार्की आपके पास बेटा? यस मैम, मैंने शेयर कर दी। हाँ, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इसके नीचे होना चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं अभी आप लोगों को समझा देती हूँ प्लीज। मैंने लिखा था बट आपको दोबारा रब कराया, उसका लॉजिक क्या है वो मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। जस्ट प्लीज बी विद मी। हाँ, इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग ये इस, सॉरी टेबल नहीं शेप था क्या, मेरे अकॉर्डिंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ क्यों नहीं आया कोई इसकी, हाँ यहाँ होना चाहिए। यस, CJM। इसे मैं पूरा लिखूं या तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। पूरा लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। मैंने शॉर्ट थोड़ा सा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे जगह चाहिए पूरा प्रॉपरली हिरार्की बनाने के लिए। या मैं पूरा ही लिखती हूँ वरना तुम लोग यही लिख दोगे। मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके इक्वल मैं कहना चाह रही हूँ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। और ये मैं क्यों कहना चाह रही हूँ, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो एग्री। थोड़ा सा और मुझे इसे इधर शिफ्ट करना होगा। हाँ, ठीक है। और इसके नीचे सीजेएम के नीचे जो हिरार्की चलेगी वो है, यहाँ पे आएगा, आएगा यार, इसके नीचे हिरार्की ये वाली चलेगी। वो कहाँ गया?
बेटा मैं इसको ना लिख नहीं पा रही हूँ, आप लोग खुद लिखेंगे क्या प्लीज? शायद अब आ जाए। JM1 और यहाँ पे इसके नीचे आएगा JM2 और यहाँ पे मेरे को ये शेप चाहिए। अराउंड हो गया। बेटा आर यू गेटिंग दिस थिंग? JM1 है, JM1 के बिलो है JM2। दिस आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इसके नीचे है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? दिस आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस। शेफाली, आई एम शेयरिंग विद यू वन मोर शीट बेटा। आपने शेयर कर दिया सबके साथ? यस मैम। ठीक है, अब बेटा ये ना आप लोग सिर्फ ड्रॉ कर लो। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं इसे सेव करके रखती हूँ चार्ट को। क्रिमिनल कोड, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, now ready for your attendance. Just a second, मैं आज क्लास का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। व्हाट इज द रीजन? सैटरडे इफेक्ट है क्या? अच्छा, ओके। टुडे सैटरडे। आज का ही अटेंडेंस था ना ये? जस्ट अ सेकंड बेटा, प्लीज अपना अटेंडेंस मार्क कर दो, करवा लीजिए।